So our today's main topic is estimation of DNA, and we will first of all discuss its introduction. What is DNA? Deoxyribonucleic acid, we all know, is hereditary material in humans and most of the other organisms. All cells in organisms, they contain a diploid amount of DNA, and in gametes, it is haploid, or half amount of DNA is present in gametes as compared with other somatic cells. DNA carries information in the form of genes for transmission of characteristics from one generation to the next generation. So all characteristics in human beings and in other organisms, they are controlled by DNA. And this DNA is transferred from parents to the offspring through gametes. DNA is found mostly in the nucleus, and this DNA which is found in the nucleus, this is known as nuclear DNA, while some amounts of DNA, they are also present in other organelles like mitochondria. So accordingly, that is named as mitochondrial DNA. Nucleic acids, DNA and RNA, they are one of the macromolecules required by all other living organisms. So other macromolecules include carbohydrates, lipids, and fats. So these, in addition to nucleic acids, other macromolecules, they are also required by organisms. One of the characteristics of DNA molecule is that it can replicate itself and double its amount. This is required because when cell division takes place, the new cells which are produced, they have the same amount of DNA as the parent cells. So that is why it is important that first of all DNA replicates itself, its amount, and then the double amount is divided equally into half in the new cells. So this is important when parent cell divides to produce daughter cells in such a way that each of the new cell has the same amount of DNA as the parent cell. DNA analysis, which we will discuss here in this chapter, that involves steps like extraction, purification, and quantification from the sample which we want to analyze. And reactions using DNA often require a particular amount of the sample and purity for the optimum performance. जाहिर है बाद सैंपल में DNA कम होगा तो हमें ज़्यादा सैंपल की ज़रूरत होगी, अगर DNA ज़्यादा है तो फिर हमें कम सैंपल की ज़रूरत होगी, और वो जो प्रोसीजर होता है उसको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत होती है so that we get suitable amount of DNA for analysis. And depending on the materials and the requirement, the process of estimation can be changed with some modifications. So, जो sample की nature है, उसके मुताबिक जो estimation का जो process है, उसको हम modify कर सकते हैं. अगर simple cells हैं, primary cells होते हैं, तो वहाँ ज़ाहिर है हमें बहुत ज़्यादा rigid protocol, बहुत ज़्यादा hard जो steps होते हैं, उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन अगर बहुत हार्ड मटेरियल है, लाइक नेल्स, लाइक हेयर्स, तो उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए जाहिर है उसी तरह हमें स्टेप्स की ज़रूरत होती है ताकि वहाँ से DNA हम हासिल कर सकें. मगर जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ से हम इजीली DNA हासिल कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ उन स्टेप्स की ज़रूरत नहीं होती. And several types of biological samples they may be used for estimation of DNA, for analysis of DNA. इसमें सारे ब्लड से हम ले सकते हैं, सलाइवा से ले सकते हैं, सीमन, स्किन, यूरिन, हेयर्स, बहुत ज़्यादा और जो मटेरियल होते हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं. एंड दिस डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द स्टडी. जैसे हम ब्लड टाइपिंग कर रहे हैं तो हमें ब्लड की ज़रूरत होगी. इसी तरह अगर हम क्रोमोसोम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंगली जो डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं जहाँ पे क्रोमोसोम ज़्यादा विजिबल हों उनको ज़रूरत होती है. So it depends on the type of the cells which we use. और वहाँ से जो DNA की आइसोलेशन होगी, जो ऐसी एस्टिमेशन होगी,
اکارڈنگلی اس کے لیے جو میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے.